hatinya pun dalam keadaan kotor. Kenapa? Karena tidak hidup dalam wahyu Allah. Dan Nabi Muhammad banyak juga orang-orang yang hanya mementingkan masjid ini hanya untuk perkara ibadah saja, tetapi ia tidak mau menghidupkan taklim wa ta'lim. Jadi banyak orang-orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian ada seseorang yang mereka ibadah sampai 20 tahun, mereka melaksanakan sholat 20 tahun, tetapi bacaan tasyahudnya itu tidak pernah benar. Jadi selama 20 tahun sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ia tidak menghidupkan taklim wa ta'lim di dalam masjid. Jadi Allah SWT ada juga orang-orang yang memiliki hati yang keras. Dia masuk ke dalam masjid, begitu keluar daripada masjid hatinya lebih keras lagi. Kenapa? Karena di dalam masjid ini tidak ada hikmah. Jadi Allah SWT apabila kita menginginkan keluarga kita ini makmur, kemudian rumah kita ini makmur, kemudian kita menginginkan kampung kita ini makmur, maka patokan pertamanya yang harus kita makmurkan adalah masjid kita dengan memperbanyak 4 perkara tadi. Dengan Allah SWT kita memakmurkan masjid kita ini, maka kebatilan-kebatilan, kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan sedikit demi sedikit akan terjauh daripada kampung kita. तो काम ये करना है कि मस्जिदों को जो है 24 घंटे आबाद करना है ना। तो इसमें जो है ना अपना पुराने साथी आकार डालते कि जो है तकलीफ पर इरादा करें कि हमारा 8 घंटे 10 घंटे के अमल में लगेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें जो है दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे राहत के और आसानियों के जो है रास्ते जो है खोलेंगे। अल्लाह ताला का वादा है हर मुत्तकी का जो है घर मस्जिद है, और जिसका घर मस्जिद होगा हम उसको राहत देंगे, उसको रहमत करेंगे, उससे रात का रास्ता आसान कर देंगे, अपनी औरा नसीब करेंगे और जन्नत में उसको दाखिल करेंगे। अल्लाह के जो वादे हैं वो हमारे मस्जिद पर जो है दुनिया व आखिरत के जो है वादे हैं। इसलिए एक एक फर्द उम्मत के हिदायत हमारे मस्जिद के अंदर छुपी हुई है। हाँ, ये इस बात का फिक्र करना है कि अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, इससे जो है ना फरमाए कि उम्मत हिदायत पर मिलना है ना। एक एक आदमी को है जो अल्लाह से जितना दूर है, हज़रत इमाम नबी फरमाते थे उसके करीब जाओगे तो अल्लाह को उतना करीब पाओगे। फरमाए कि मस्जिद के अमाल में तीन जो है फरमाए की जमातें जो है बनानी है। एक वो जमात होगी जो फरमाए कि मस्जिद के जो है करीब में जो घर है, फरमाए की जो गलियाँ हैं उसमें जो जाएगी, और एक जमात जो है अड्डों में जाएगी। चाहे जो है फरमाए कि वो है ना शराब करते हो, जुआ करते हो, फितने करते हो, ऐसी जगहों में तलाश कर करके जो है जाए और उनको जो है मस्जिद के अंदर लेकर आए और उनको जो है हमारे मस्जिद के अंदर जो है दाखिल करे। फरमाए कि और तीसरा जो है फरमाए तस्कील के लिए कि जो है फरमाए तकाज़े मस्जिद के हैं उन तकाज़ों के ऊपर जो है एक जमात बनेगी। ये 3 जमातें जो है बनेगी। फरमाए कि मस्जिद के अमाल में फरमाए कि जब मस्जिद की आबादी की मेहनत होगी तो 3 जमातें 3 किस्म की जमातें जो है निकलेगी है। और फरमाए कि एक एक उम्मत को मस्जिद के अंदर लाना है, और मस्जिद के अंदर ईमान के हलकों में फरमाए कि ईमान का नूर ऐसे पैदा होता है जैसे मुर्गी के परों के नीचे अंडे में जान पैदा होता है, ऐसे ही फरिश्तों के परों के नीचे फरमाए कि ईमान का नूर पैदा होता है। हाँ, इसीलिए जो फरमाए हिदायत का सबब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम के ज़माने के अंदर सहाबा-ए-किराम को जिसका दिल सख्त होता था उसको मस्जिद के अमाल में रखते थे। फरमाए कि कबीला सकीफ के लोगों का दिल सख्त था, वो जो है ईमान के अंदर दाखिल होना चाहते थे, मगर ये कहते थे कि हम जो है फरमाए कि जब चीज़ों का इनकार करते थे कि हम इसको जो है नबी कबूल नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन उनको मस्जिद के अंदर रखा। इसलिए जो है एक एक उम्मत का हजरत इस वक्त में चाह रहे हैं कि इनका जो है फरमाए कि मस्जिद के अंदर वक्त लगे। जब एक मुसलमान मस्जिद की तरफ चलता है तो अल्लाह की तरफ चलता है, और अल्लाह की तरफ चलता है तो अल्लाह की रहमत फरमाए उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। इसलिए एक एक फर्द उम्मत को हमारे मस्जिद के अंदर जो है जोड़ना है। इस वक्त में हजरत जी का बहुत ज्यादा जोर है इस पर कि कोई भी जो है मुसलमान फरमाए कि मस्जिद के अमाल से महरूम न रहे, बल्कि हर एक जो है फरमाए कि दावत इल्लाह में, तालीम व ताल्लुम में, इबादत में, खिदमत में, ये तरबियत के अमाल है, हिदायत के अमाल है। हमारे मस्जिद जो है अमाल तरबियत, अमाल नबूवत, अमाल हिदायत है, और यही अमाल को जो है फरमाए घरों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया था, ताकि जब मसरूआत का, बच्चों का, हर एक का ध्यान फरमाए कि अल्लाह की तरफ हो, हर एक का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, और हर एक जो है फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाले हो। यही चीज जो उनके अंदर थी, उनके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा, उनका भी अल्लाह के लिए मरने में जाने
जानते थे कि हम जो है अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होना वो फर्ज समझते थे। इसका वजह यही था कि उनका दिल अल्लाह की तरफ था। आज हमारा दिल असबाब की तरफ इसलिए है कि मस्जिद के माहौल से हम जो है निकलकर बाजार के माहौल पर हमारा ज्यादा वक्त लग रहा है, जो शैतानी माहौल होता है, जो शैतानी खसरत पैदा हो रही है, दुनिया की मोहब्बत, लालच, शोहरत और तमाम तरह के जो है फरमाए की फितने हमारे अंदर पैदा हो रही है बाजार के माहौल से। इसीलिए बाजार के माहौल से जो है मस्जिद के माहौल में मुसलमानों को जो है dan Allah Subhanahu wa taala dia menyampaikan bahwa bagaimana setiap bapak-bapak yang hadir di sini dari sekarang pasang niat untuk bagaimana memakmurkan masjid-masjidnya selama 24 jam. Bersedia apa semuanya? Insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui bahwa masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, dan barang siapa yang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, kemudian dia apabila ada masalah-masalah ini akan kembali ke rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala ada beberapa fadilah ataupun keuntungan bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumah. Jadi Allah yang pertama, dia akan diberikan di dunia ini ketenangan, kemudian ketentraman, kemudian hati Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan selama ia hidup di dunia. Kemudian dua lagi Allah SWT akan balas di akhirat. Yang pertama adalah ia akan bisa melewati sirat secepat kilat. Kemudian yang kedua, ia akan masuk surga dengan sangat cepat. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid ini adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, maka ia seolah-olah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang yang bertamu ke rumah kita, maka kita jamu. Begitu juga ketika ada orang-orang yang mereka menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, maka ia seolah bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan jamuan kepadanya. Jamuan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala adalah akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan iman. Jadi bagaimana kita ini bisa menghidupkan masjid kita ini selama 24 jam. Wa Iyas rahmatullah alaihi beliau mengatakan bahwa bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ada 3 perkara ataupun ada 3 hak ketika mereka ini ingin memakmurkan masjid. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti memakmurkan masjid ini ia tinggal di dalam masjid ya, buat amal-amal di masjid, tetapi ada 3 perkara yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah mendatangi orang-orang ataupun tetangga-tetangga yang ada di sekitar masjid. Itu hak pertama, yaitu ketika ia sudah menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, maka ia memiliki 3 hak, yaitu mendatangi tetangga-tetangga terdekat yang ada di sekitar masjid. Kemudian yang kedua, mendatangi tetangga-tetangga yang jauh yang ada di sekitar masjid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, tetangga-tetangga yang jauh ini termasuk juga tempat-tempat bermaksiat, tempat-tempat minum khamar, maka ini kita datangi, kemudian kita membawa setiap diri pribadi mereka yang mana mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bawa ke dalam masjid, kemudian barulah kita pada saat itu membuat halaqah-halaqah iman, bagaimana supaya mereka ini ada masuk ke dalam hati mereka ini cahaya daripada hidayah dan cahaya daripada iman. Kemudian yang ketiga, hak daripada masjid ini bukan hanya sekedar mendatangi tetangga terdekat ataupun tetangga yang jauh, tetapi hak daripada masjid ini orang-orang yang sudah kita datang kepada masjid, orang-orang yang sudah kita bawa dari luar untuk datang kepada masjid, maka kita bentuk mereka satu jamaah untuk bagaimana mereka juga bisa keluar daripada masjid, kemudian mengajak orang lain masuk ke dalam masjid. Jadi ada 3 hak. Yang pertama mendatangi tetangga-tetangga terdekat masjid. Kemudian yang kedua mendatangi tetangga-tetangga yang jauh dari masjid. Kemudian yang ketiga membentuk satu jamaah dan menganjurkan mereka untuk membawa orang lain juga masuk ke dalam masjid yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini adalah tempat di mana para malaikat berkerumun di tempat tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini memiliki keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini senantiasa menyambung hati kita di dalam masjid, maka sama seperti kita ini dinaungi ataupun berteman dengan para malaikat. Beliau menyampaikan sebagaimana satu telur yang baru keluar daripada
induk ayam betina ini, kemudian sama ayam ini dikerami sampai telur ini menetas sehingga melahirkan seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu juga ketika kita ingin menjadikan rumah, menjadikan masjid ini sebagai rumah kita, kemudian kita senantiasa buat amal-amal masjid dengan 3 perkara tadi, maka situlah akan menetas perkara-perkara hidayah, akan menetas cahaya-cahaya iman yang akan masuk ke dalam hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala Maulana Ilyas juga menginginkan bagaimana supaya setiap dari pertama ini mereka menghidupkan masjid ini dengan 3 perkara tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah SAW, ketika ada sahabat-sahabat yang mereka yakin kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha Esa. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya, tetapi saya tidak yakin bahwa engkau ini adalah Nabi. Maka Rasulullah SAW tidak meninggalkan sahabat itu begitu saja, yaitu salah satu sahabat daripada Bani Saqif. Kemudian Rasulullah SAW ini membawa sahabat tersebut ke dalam masjid, kemudian mengikatnya di dalam masjid. Kemudian setelah 3 hari baru diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW. Apakah kamu mau beriman kepadaku? Maka Rasulullah SAW dengan sendirinya dia pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana cara Rasulullah SAW memperbaiki hati-hati daripada para sahabat, yaitu dengan menjadikan mereka ini ada ta'alluq ataupun ada hubungan dengan masjid. Jadi banyak fadilah-fadilah orang-orang yang bagaimana mereka ini menjadikan masjid sebagai rumah mereka. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hajat-hajat dunia mereka. Bagaimana lagi nanti ketika hajat-hajat mereka di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka. Kenapa? Karena mereka ini sedang menyambung hubungan mereka dengan masjid, itu seolah-olah mereka menyambung hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang ini tidak mau menyambung hubungan mereka dengan masjid, maka seolah-olah mereka memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu banyak orang-orang yang mereka ini menjadikan masjid sebagai ta'alluq kepada mereka, hubungan kepada mereka, maka sehingga Allah Subhanahu wa taala menyambung hati dengan mereka, sehingga apa keperluan mereka ini Allah Subhanahu wa taala tunaikan, baik dari segi keperluan dunia ataupun segi daripada kebutuhan daripada akhirat. Tapi banyak orang-orang yang mereka tidak mau menyambung hati dengan masjid, sehingga ketika mereka memiliki keperluan hajat ataupun keperluan dunia, apalagi nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempermudah bagi hajat-hajat mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menjadikan masjid ini sebagai tempat utama kita. Bagaimana hadirat kita ini senantiasa berulang-ulang kali jadikanlah masjid sebagai tempat kalian untuk mengadukan segala sesuatu, jadikanlah sekolah masjid ini sebagai tempat utama kalian. Maka ketika kalian sudah buat keputusan bahwa masjid ini adalah rumah saya, masjid ini adalah tempat saya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripada diri kita ini kebahagiaan. Sekarang kita Subhanahu wa taala, kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, salahkan diri kita. Kenapa? Karena kita ini lebih banyak di kantor daripada di masjid, lebih banyak di pasar daripada di masjid. Kemudian ketika terjadi kebatilan, kerusakan, kemaksiatan, kita menyalahkan orang lain. Padahal diri kita lebih banyak di pasar daripada kita ini memperbanyak waktu di masjid. Ketika seseorang lebih banyak menggunakan waktunya di pasar, itu seolah-olah ia ridho menjadikan setan sebagai kawannya. Tetapi ketika ia menyibukkan diri dan memperbanyak waktunya di masjid, maka ia telah ridho menjadikan malaikat ini sebagai kawannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jadikan masjid ini adalah tempat utama untuk menyelesaikan masalah keduniaan kita, lebih daripada masalah-masalah akhirat kita. Maka dengan sebab masjid ini Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita hidup amalan-amalan masjid ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki diri kita, kemudian masturah kita ataupun wanita-wanita kita yang Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki juga, kemudian anak-anak kita ini juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayahnya ini ataupun suaminya ini, lakinya ini, mereka ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan sesama keluarga mereka. एक काम जो ये करना है कि मस्जिदों को जो है करना है कि 24 घंटे जो है आबाद करना है। इस वक्त में जो हजरत जी जो उनका फिगर है
से अलिया जो है फरमा रही थी कि रातों को जो है सोते नहीं, रात भर अल्लाह के सामने जो है फरमाए कि अल्लाह से जो इंतजार करते। अल्लाह ने जो बातें उनको समझाई है, इस वक्त में जो उम्मत को आला बतला रहे, सालाना जो है फरमाए कि 4 महीने, अब तो हिंदुस्तान वालों को 6 महीने, 4 महीने जो है फरमाए खुरूज, और 2 महीने निजामुद्दीन के अंदर, अब फरमाए कि 24 घंटे के अंदर 8 घंटे हैं। बात सहाबा को तो पूरा दिन जो है 24 घंटे देने का जो मामूल था, आप जो है एक दिन किसी का जो है एक दिन जो है मस्जिद में देते थे, एक दिन अपने जो है कारोबार में, दूसरे दिन भी मस्जिद में। इस तरह से जो सहाबा के तकलीफ पर आना है। इस वक्त में जो आमाद बतला रहे हैं, पूरे आलम के निज़ाम को अल्लाह ताला बदलेंगे, पूरे आलम के निज़ाम को जो है बदलेंगे। पूरी दुनिया से बातें जो है टूटेगी। वो वक्त है, अगर हजरत जी जो इस वक्त में बदलाई बात अल्लाह ताला काश हमें भी और आपको भी समझा, और हम जो है इताअत पर जो है चलने वाले बन जाए। इसी तरह से अंबिया सहाबा के जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है फरमाया बातिल के नक्शों को तोड़ा है, फरमाए कि हक के रास्ते से, तो इसी तरीके से इस जमाने में ही जो है फरमाए कि हक के रास्ते से अल्लाह ताला बातिल को तोड़ेंगे। और अल्लाह तोड़ना चाहते हैं, मगर आज जो है फरमाए कि हमारी जिंदगी जो है ना फरमाए कि वो अमाल से जो है टूटी, इसलिए उन अमाल में लाना इस वक्त में आदत दिखा रहे कि जो है फरमाए सालाना 4 महीने, और जो है 4 महीने सिर्फ नहीं, मतलब की कोई बात 4 महीने नहीं, सालाना 4 महीने, हर साल 4 महीने फरमाए कि, और हर दिन हर महीने 10 दिन। अगर इस तरह से हमारा मस्जिद में जो है 3 दिन की नमाज एक लगती है, तो फरमाए कि 3 दिन की जो है जमात मस्तूरात का जो है फरमाए कि 2 दिन कर सकते हैं, मर्दों से ज्यादा मस्तूरात का, मर्दों की जमात फरमाए कि 3 दिन लगती है, तो मस्तूरात की 6 दिन करनी चाहिए, नहीं तो कम अक्सर तो 3 नमाज करनी चाहिए। जिस तरह से मर्दों के लिए 3 जरूरी है, मस्तूरात के लिए 3 जरूरी है। अगर काम पाए सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो काम बहुत जल्दी जो है फरमाए तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए जो है फरमाए कि 10 दिन में कभी आपने बीवी को ले गए, कभी वाला को ले गए, कभी जो है फरमाए कि टूटी को खाला को बहुत सारा सबको दीन के जो है मामले में हमारी मस्तूरात दाइया बनती है, आने वाली मेहमान को बहोगे सबको जो दावत देने वाली, तो फरमाए कि इस तरह उनको भी जो है फरमाए कि 3 दिन में जो है उनको भी शामिल करना है, और सालाना कोई में फरमाए कि जिले के अंदर में उनको भी ले जाना है, फरमाए कि शराइत पूरा करके। और इस तरीके से जो है फरमाया कि स्टूडेंट है हमारे जो पढ़ने वाले, बहुत बड़ा अमला है स्टूडेंट, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ से जो है फरमाए कि मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जो है पूरे आलम की फिक्र है, फरमाए कि स्कूल कॉलेज के माहौल से जो है फरमाए कि धीरे धीरे जो है डॉक्टर इंजीनियर हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं, लेकिन जहाँ इस्लामी नहीं होता है, जहाँ जो है फरमाया रहने वाला हो जाता है। इसलिए जिस मस्जिद से या जो है कॉलेज है, तो जो कॉलेज के अंदर मस्जिद है तो वहाँ से, या जो है फरमाए कि जहाँ पर उनका करीब का मस्जिद है वहाँ से उनको करना है। 10 मिनट का तालीम, 10 मिनट का मशवरा, 10 मिनट का मुलाकात होता है। पढ़ने के जमाने में चलना नहीं, छुट्टियों में छोड़ना नहीं स्टूडेंट को। आप मदरसे में जो है फरमाए उलमा कराम से बार बार उनसे जो है मुलाकातें करना, उनकी मोहब्बत से निकाह देखना, और उलमा कराम को जो है फरमाए कि अपना फरमाए हमारे बराबर है, फरमाए कि वहाँ जो वहाँ भी जो घंटे के निजाम जो है हो, अपने जो वक्त लगे उलमा के साथ में लेके जाना, वहाँ की तरफ इस तरीके से जो है फरमाए कि मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर, और घरों के अंदर, मस्जिद के अंदर, सारे माहौल में हमारे दावत जिंदा हो। ये जो है इस वक्त में जो है चाहा जा रहा है, पूरी कुर्बानी के साथ जो है काम करने का करेंगे भाई इंशाअल्लाह। इसके लिए सबसे पहले 4 महीने के लिए जो है फरमाए कि इरादा करें, अपने मुल्क के लिए ऐसे इरादों के लिए जहाँ पर जमातें नहीं पहुँचती है, पैदल सफर के लिए फरमाए कि इरादे करें, जहाँ पे वहाँ जाएंगे, हमारे इरादे होंगे, हमारे धंधे होंगे, तो अल्लाह ताला हमारी भूलों पर जो है हिदायत को मांग करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने कुर्बानी दी, अब कुर्बानी का अल्लाह ताला ने कबूल हुआ है, अल्लाह ने कहा कि आप आवाज लगाइए
जो आवाज पहुंचती है वो कुर्बानी की बुनियाद पर फरमाए कि आसानी की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि जितना कुर्बानी देंगे अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होंगे। अल्लाह हमसे जो है जैसे हजरत इमाम इलियास रहमतुल्लाह ने कुर्बानी के साथ जो है इस हफ्ते में इस दावत के अमल को जो है कबूल करवाया अपने आप को, तो उनके फिक्रों को पूरे आलम में अल्लाह ने पहुंचाया। तो लोग भी जो है कुर्बानी के साथ करेंगे, अल्लाह ताला उनको जो है जब फिक्रों के साथ जो है मेहनत होगी कुर्बानी के साथ, अल्लाह ताला उसके असरात को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और पूरी दुनिया के बाकी के नफ्सों को बोलेंगे। भाई इंशाअल्लाह Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan bahwa ada lagi kita yaitu Masyarakat Hafizahullah Ta'ala. Beliau juga senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada ahli keluarganya untuk bagaimana bisa menghidupkan masjid ini selama 24 jam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dari kaum laki-lakinya saja yang keluarga beliau, tetapi aliyah beliau, istri beliau juga diberikan nasihat dari itu bagaimana bisa menghidupkan rumah ini amalan-amalan selama 24 jam. Saya pernah mendengar cerita bahwa hampir setiap malam bahwa istri daripada Haji Muhammad Hafizahullah ini tidak pernah tidur malam, beliau menyibukkan dengan amalan-amalan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seukuran beliau yaitu yang sudah tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih menyibukkan dirinya ini dengan menghidupkan amalan-amalan masjid selama 24 jam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu juga beliau menyarankan untuk bagaimana keluarganya ini juga ikut terlibat dalam menghidupkan amalan masjid. Kemudian juga bagi kaum wanitanya yaitu menghidupkan amalan-amalan rumah. Jadi ketika satu keluarga ada kerjasama dalam buat usaha agama, maka dengan sebab itulah hidayah ini akan tersebar. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita ini maksud dan tujuannya, kita ini sebenarnya keluar 4 bulan, kemudian kita keluar 10 hari setiap bulannya, kemudian kita 8 jam dalam setiap 24 jam ya, dalam setiap harinya. Maka itu tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita ini bisa menghidupkan masjid-masjid selama 24 jam, kemudian kita bisa mengajak orang-orang yang ada di keluarga kita ini untuk kerjasama bagaimana menghidupkan amanah rumah dengan amalan masjid. Jadi Allah SWT perlu kita ketahui bahwa 40 hari ini sudah tidak ada. Yang ada adalah setiap tahun 4 bulan, kemudian setiap bulannya 10 hari, kemudian setiap harinya meluangkan waktu 8 jam. Dan Allah SWT berhubung di markas kita ini di Baubudik ini sedang ada masalah, maka harusnya kita ini setiap tahun ini bukan hanya 4 bulan, tetapi setiap tahunnya ini keluar tahun, kemudian setiap 2 bulannya dalam setiap tahun ini kita pintar di Baubudik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala aslinya kita ini harusnya setiap tahun ini 6 bulan, tetapi karena sedang ada masalah setidaknya kita pegang berat dalam setiap tahunnya ini 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menyampaikan bagaimana supaya ketika kita bisa menjadikan usaha dakwah ini sebagai maksud hidup kita jadikan usaha dakwah ini sebagai jalan hidup kita, maka ketika itulah kebatilan-kebatilan, kerusakan-kerusakan akan Allah SWT jauhkan daripada kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum, cara mereka untuk menghilangkan kebatilan-kebatilan yang ada di masyarakat ketika itu, yang ada di dalam hati setiap para sahabat radhiyallahu anhum, apakah menyibukkan dirinya dengan taklim? Apakah menyibukkan dirinya dengan ibadah? Tidak, tetapi membentuk jamaah-jamaah kemudian keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab inilah kebatilan-kebatilan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan daripada masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian daripada setiap diri pribadi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan heran hari ini saya sudah keluar 4 bulan, tetapi kebatilan tidak keluar dari dalam kehidupan kita. Kalau saya sudah keluar setiap bulan 10 hari, kok kebatilan ataupun kerusakan tidak keluar dalam kehidupan masyarakat saya sudah meluangkan waktu setiap hari 8 jam, tetapi kok kebatilan tidak keluar dalam kehidupan saya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita menjadikan dakwah ini hanya sebagai nisab ataupun rutinitas saja, belum menjadikannya sebagai maksud daripada kehidupan kita, belum menjadikannya sebagai jalan hidup kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika kita sudah buat keputusan bahwa usaha dakwah ini adalah maksud hidup saya, usaha dakwah ini adalah jalan hidup saya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kebatilan, kerusakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kebatilan dan kerusakan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala kita perlu perhatikan juga bagaimana kita ini bukan hanya menyibukkan diri kita ini hanya 2-4 bulan hanya laki-lakinya saja, kemudian keluar 10 hari dan setiap bulan hanya laki-lakinya saja, kemudian kita keluar setiap meluangkan waktu setiap 8 jam dan setiap hari, mungkin kita hanya menyibukkan diri kita saja. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita ini memiliki keluarga, yang mana keluarga ini ada anak-anak, kemudian ada kaum pria, kemudian ada kaum wanita. Jadi bagaimana kita juga ajak daripada setiap wanita-wanita yang ada di rumah kita ini untuk bekerja sama bagaimana usaha dakwah ini meningkat ke seluruh alam ataupun tersebar di seluruh alam, itu dengan sebab adanya kerjasama antara kaum laki-laki dengan wanita tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sibuk hanya keluar dengan laki-lakinya saja, kemudian kita tidak mau mengajak orang-orang wanita yang ada di rumah kita ini untuk terlibat dalam usaha dakwah ini, maka usaha dakwah ini bukannya tidak tersebar, akan tersebar juga, tetapi terlambat. Tetapi kalau kita ingin pesan usaha dakwah ini tersebar, agama ini tersebar, hidayah ini tersebar, maka harus ada kerjasama antara kaum wanita dengan kaum pria. Sehingga dengan sebab kerjasama dua mereka ini, hidayah itu akan pesan tersebar ke seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala selain kita meluangkan waktu setiap bulannya misalnya 3 hari paling lemah 3 hari kita ambil ini keluar bidang, kemudian 3 hari di bulan yang akan datang kita ambil masa untuk bagaimana keluar masuk. Atau kita menyibukkan juga misalnya 3 hari di bulan pertama dengan masuk, 3 hari di bulan kedua dengan masuk, kemudian 3 hari di bulan ketiga dengan masuk, boleh juga. Kemudian hari SWT ketika kita sudah meluangkan waktu, kita keluar 4 bulan, tidak ada salahnya kita meluangkan waktu lagi, kita tambah masa keluar 40 hari dengan masyarakat kita. Kemudian hari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab inilah pengorbanan kita ini, maka hidayah ini akan tersebar. Dan hadis Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menyuruh seluruh makhluk ataupun menyuruh seluruh umat ini untuk pergi haji. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapa yang akan mendengar suara ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Ibrahim alaihissalam tugas kamu ini hanya menyampaikan saja, hanya mendahulukan saja. Adapun yang menyampaikan ini aku. Maka Allah Subhanahu kenapa suara Nabi Ibrahim ini terdengar ke seluruh alam? Kenapa suara Nabi Ibrahim ini bahkan sampai terdengar ke alam ruh? Karena ada 2 orang yang bekerja sama untuk buat usaha agama, yaitu seorang istri dengan seorang suami yang mereka bekerja sama, sehingga dengan sebab pengorbanan mereka ini, harta diri dan waktu mereka, sehingga suara mereka ini, ajakan mereka ini sampai ke terdengar ke alam ruh. Begitu kan suara kita ini akan sampai ke seluruh alam apabila kita ini mengajak istri-istri kita ini untuk keluar masuk. Dan itu bagi yang istrinya sudah menikah, maka ataupun yang belum menikah, maka kita boleh membawa ibu kita boleh membawa wanita-wanita yang makhluk dengan kita untuk sama-sama keluar masuk. Jadi tidak ada alasan kalau saya tidak bisa keluar masuk karena saya bawa kita, tidak ada alasan. Yang ada adalah karena kita ini malas, tidak mau mengajak wanita-wanita yang ada di rumah kita untuk keluar masuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping itu kita jangan lupa bahwa di tengah-tengah kita ini ada yang namanya anak. Yang mana anak ini juga ia masa-masa belajar ataupun student. Jadi jangan sampai sekolah mereka ini menghambat kita dengan jalannya usaha dakwah. Jangan sampai anak kita ini nanti sudah jadi dokter, sudah menjadi insinyur, ataupun sudah menjadi pangkatan-pangkatan daripada jabatan-jabatan dunia, tetapi mereka menjadi penentang kita dalam usaha dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala kita sarankan kepada anak kita ini, apabila di masjid kamu atau apabila di madrasah kamu, apabila di sekolah-sekolah ataupun di universitas kamu itu ada masjid, hendaklah kamu ini meluangkan masa sekolah kamu ini setengah jam untuk masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala kita bagaimana? 10 menit buat taklim, kemudian 10 menit buat musyawarah, kemudian 10 menit lagi itu mengajak orang-orang yang ada di kelas kita untuk sama-sama mereka ini bisa menghidupkan masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala
apabila kita tidak menyarankan kepada student ataupun pelajar, kepada anak kita ini untuk bagaimana mereka ini menghidupkan masjid yang ada di sekolah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala jangan salahkan kita ketika nanti mereka sudah menjadi fasilitas-fasilitas milik jabatan dunia, tetapi mereka menjadi penentang kita dalam usaha dakwah. Maka Allah cara menghindari itu adalah bagaimana kita menyarankan mereka apabila masa sekolah mereka ini, masa belajar mereka ini, mereka belum dapat libur, kita sarankan mereka untuk bagaimana menghidupkan masjid yang ada di sekolah mereka atau tempat belajar mereka. Kalau misalnya mereka ini sudah libur, maka kita sarankan mereka untuk bagaimana menggunakan seluruh waktunya ini untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau juga, maka kita sarankan kepada mereka ini untuk bagaimana mereka bisa menghidupkan masjid yang ada di rumah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala jangan lupa juga bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ini ada yang namanya alim ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala alim ulama ini adalah petunjuk jalan bagi kita. Maka kita sambungkan diri kita kepada alim ulama, kemudian anak-anak kita ini kepada alim ulama, kemudian Allah Subhanahu wa taala kita jaga adab kita dengan alim ulama, kemudian sebagaimana kita ini menghidupkan amalan-amalan masjid selama 24 jam. Salah satu menghidupkan amalan masjid selama 24 jam tertibnya adalah mendatangi ulama-ulama. Itu juga salah satu usaha memakmurkan masjid. Jadi usaha memakmurkan masjid bukan hanya menghidupkan amalan-amalan ibadah dalam masjid, tetapi mendatangi ulama-ulama, berziarah kepada ulama-ulama. Maka itu adalah salah satu program usaha memakmurkan masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala inilah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian sebagaimana kita sampaikan dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kita sampaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala pengorbanan dari bangsa keluarga Haji Hafizahullah taala, mana bagaimana mereka yang laki-lakinya menunaikan amalan masjid, kemudian wanitanya menunaikan amalan-amalan rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala dari sini kita harus buat keputusan bagaimana saya ini keluar 4 bulan setiap tahun, kemudian setiap bulannya saya meluangkan waktu 10 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya kita meluangkan waktu 8 jam. Perlu diingat 4 bulan, kemudian 10 hari tiap bulan, 4 bulan yang tiap tahun, kemudian 8 jam dalam setiap hari. Ini bukan patokan waktu, tetapi ini adalah masa paling sedikit. Kalau kita ingin menambah masa 4 bulan menjadi 6 bulan, kita letakkan dalam musyawarah, kemudian kita diputus, kita harus siap berasa. Apabila kita dalam 10 hari ini, kita ada semangat untuk tambah masa menjadi 20 hari, kita mendapatkan tazkirah yang baru, maka Allah kita boleh masukkan dalam musyawarah, kemudian kita siap diputus dengan musyawarah. Maka Allah inilah usaha dakwah yang sudah berjalan di Kaumudin. Maka bagaimana kita jalankan usaha dakwah tersebut dengan sifat ketaatan. Apabila kita ingin menjalankan usaha dakwah ini tidak dengan sifat ketaatan, kita hanya menjalankan dakwah ini usaha inisiatif kita saja dengan menggunakan pola pikir kita saja, bertahun-tahun walaupun kita menjadikan usaha dakwah ini kita ini sebagai maksud hidup kita, tetapi kita tidak dasari dengan sifat ketaatan, maka apa yang sudah kita usahakan ini akan menjadi sia-sia. Tetapi usaha yang sedikit kemudian kita dasari dengan ketaatan, maka ini akan menimbulkan hasil yang sangat luar biasa. Hidayah akan tersebar kemana-mana, kemudian cahaya iman akan masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala diminta oleh kita ini bagaimana bapak-bapak buat keputusan untuk bagaimana menjalankan usaha dakwah setiap tahunnya 4 bulan paling sedikit, kemudian setiap bulannya 10 hari paling sedikit, kemudian setiap harinya 8 jam paling sedikit. Kemudian Allah kita jalankan yang sedikit ini dengan sifat ketaatan, karena itu akan menghasilkan hidayah yang sangat luar biasa. Bersedia apa semuanya insyaallah? Insyaallah.